Hello, very good morning to everyone. So, hope you all are doing good. You all are fit and safe. Just a minute. Is the audibility clear to you? Yeah, the external sound is there to interrupt a bit, but build your mind strong enough so that we won't get interrupted by the external sound. All right, so we're supposed to begin a new chapter today, but I'll talk about the previous one because at the end of the last discussion the connection got interrupted and I think we missed the last part of the chapter, right? So the 12th number point is our point of discussion. At the same time, we are going to talk about the exercises and definitely the questions that comes to my mind. I will definitely keep that for you. So hoping that you all are ready to answer the questions. I will begin with the question itself. थोड़ा हम लोग अपने previous knowledge को test कर लेते हैं, कितना आपका listening strong रहा है वो test कर लेते हैं, क्योंकि अभी live मुझे सुनो या फिर थोड़ी देर बाद में सुनो, you will be ultimately listening me, है ना? और उम्मीद है सभी के पास बुक होगा और आप लोग बुक में ग्लोसरी पे काम कर ही रहे होगे, राइट? Yeah, I am at my home, Heman, Indo-Bhutan border, West Bengal. All right, so let us begin with the interrogative session. थोड़ा कुछ समय हम लोग इंटेरोगेशंस पे देते हैं, फिर हम लोग लास्ट पार्ट पे आएंगे, फिर एक्सरसाइज कवर करेंगे एंड वी विल वाइंड आवर बिजनेस अप विद इन 40 मिनट्स. ओके, सो रेडी? चलिए, so let me begin with the most simple question. The first question to you: what was the gift prepared for the father? What was the gift being made, being prepared by Kezia for the father to present him on his birthday? One word answer. Exactly, Vaishnavi is the first to answer, and the answer is correct. Pin cushion. अच्छा, yellow भी था. This is not known. Is it meant there anywhere in the book? Yellow. If it is there, I will be thankful to Piyush. Yellow था क्या? Simply we know pin cushion. Yellow भी था Piyush. If it is there, then definitely. Okay, Pauna. Yeah, thank you for the thing that you are doing, and I do watch. Okay, and we are not at all disturbed. Okay, so keep the good work. Keep it up. Keep it doing. Surely, I'll visit, and it is good enough, worth viewing, worth seeing, worth watching. Okay, fine. All right. So yeah, yellow silk was used. Okay, if it is yellow silk, well and fine, because in the text it is simply mentioned pin cushion, and though you have mentioned the color even yellow silk, that is good enough. Means you had minutely went through the text. It suggests. Yeah, thank you, Vana, and be in touch. Stay in touch. Keep up the good work. Work for yourself, and we are there to support you. Fine. All right, so coming back to the text, answer me the next question. Tell me the name of the neighbor who Kezia was weaving through the gap of her fence. Tell me the name of the neighbor
who Kezia was looking at through the gap of her fence? Mr. McDonald's. Okay, Khushi Jaiswal first want to answer. Anyone else? Was he actually Mr. McDonald's? Exactly. So Mr. McDonald was the person. How many children he had? Mr. McDonald is the absolutely correct answer. Yeah, moving on. How many children he had? Five children. And the youngest child was named. Tell me the name of the youngest child. Yeah, five is the correct answer. Very good. All are answering correctly. Five is the correct answer. Tell me the name of the youngest child who was sitting on his shoulders. Exactly. Mao. So you're not getting even the time to think. I am firing one after the other, right? But when you complete the chapter, there should be the confidence that yes, we can answer either of the questions asked. जो भी पूछना है पूछ लो. We are ready to answer it. Very good. Mao was on the shoulders. Okay, father's shoulder. Fine. So, what are the things that the butcher in Kezia's nightmare? What are the things that the butcher in Kezia's dream was carrying? And I'm not going to translate the question in Hindi because understanding English is also a part of our learning, and you need to understand that. What are the things the butcher was carrying? In Kezia's nightmare, in Kezia's bad dream. Nightmare को bad dream ही बोलना सही रहेगा. Bad dream or nightmare. Okay, was that only knife? No, no, no. Candle नहीं शुभम. Father was carrying candle. पापा candle लेके आए थे. And I asked you in plural number, what are the things? You are answering knife, absolutely correct. Knife is there, but I am expecting one more thing that the butcher was carrying with him. One more thing was there that the butcher was carrying with him. Answer me. Knife तो था ही और क्या था? Yeah, he was carrying rope, है ना? Rope और knife लेके वो एकदम असुर की तरह हंसता था. Means the scary laugh. Okay. Good morning, Rajat. So knife and the rope was the thing. All have answered above their knife, only knife. The second thing must be known to you. यही पता होना चाहिए. क्योंकि जब मैं what are the things में पूछ रहा हूँ, if you are allotted 2 marks for this, then definitely I will expect the other answer too, the other word too. Okay, Rajit, nothing wrong. You missed a few questions. You can watch that later on. बाद में आप सुन सकते हो उसे. Okay, moving on. What the important piece of paper was for? The important piece of paper, we know that Kezia turned to fill the birthday gift, right? So what was the important piece of paper for? That was actually a speech. I want to know the institution, what was it for? Yes. Here again comes Khushi Jaishwal, first one to answer. That was the speech for
Port authority, exactly. Speech for port authority. हाँ, संध्या सुजाता, SPEECH ठीक है. गलतियों को मिटा देना एक तरह से सही होता है, बट यहाँ पे करेक्ट करना. SPEECH, exactly. That was the speech for port authority, right? Port authority. Okay. Moving on, आगे बढ़ते हैं. So before I go through the last point, 12th number point, there are a few more questions coming to my mind, and I want you to answer them correctly. Okay. How old was Kezia? How old was Kezia? I had asked these questions before too, and many of the answers were correct. It is not mentioned exactly. So this should be the answer. When the question is confusing, you need to be confident enough to say that yeah, I have gone through the text and it is mentioned nowhere. कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है. So the age of Kezia is not mentioned anywhere. Again, fine. So who was there? Okay, listen my question. Just a minute, let the sound end. Yeah, fine. Listen the question now. Who was there at home in the absence of Kezia's mother and grandmother? Who was there to take care of Kezia at home in the absence of Kezia's mother and grandmother? A name came up there, isn't it? Exactly, exactly. So here Pius is the first to answer. After Pius comes Khushi Jaiswal. Okay, the competition must go on. Okay, fine. So to take care Kezia, the cook Alice was there present, and undoubtedly father was also there on that particular night. Yeah, on that particular night, father was also there, but Alice was taking care of her. Alice took care of Kezia throughout the day. But the question came, what about the night? Because she was not in habit to sleep alone, or well, she used to sleep alone, but she was in habit of getting a bad dream. She was in habit of dreaming a butcher, a bloody butcher, who was carrying a knife in his hand and rope in the other. So that was something very much scary, काफी ज़्यादा scary डरावना वो होता था. And she used to shout or scream in the dream. Then grandmother used to take her with her, है ना. तो grandmother अपने साथ उसे लेके जाया करती थी. But on that particular night, neither the mother nor the grandmother was present. Where had they been? Mother and grandmother was not there at home. तो वो लोग गए कहाँ थे? Where had they been on that particular day? Where had the mother and the grandmother been? Exactly. Here comes Vaishnavi. First one to answer. All the answers are correct. Vaishnavi, Piyush, Shubham, Gunkun, Manisha, Sandhya. All have answered correctly. Khushi, Manvi, Mahi. All have answered correctly. But the first one matters, right? चलिए यहाँ पे वैसा competition नहीं होगा because network is connecting us, isn't it? So if my voice is reaching faster to someone, definitely the answer would I'll get the answer from him or her first, right? All right. So in that condition, we cannot compete here, but definitely the correct answer is expected. ठीक है. करेक्ट आंसर तो मिलना ही चाहिए. तो देखिए अब एक चैप्टर से हम लोग 8 10 12 पॉइंट पढ़ ले रहे हैं एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीप ऑन कमिंग. ये आता ही रहता है. इनफैक्ट फ्रॉम एवरी पैराग्राफ वी कैन फ्रेम मल्टीपल क्वेश्चंस. बहुत सारा क्वेश्चंस बन सकता है. सो वी विल ट्राई फ्रेमिंग क्वेश्चंस. और क्वेश्चन फ्रेम करना भी चैप्टर को अच्छे से समझने जैसा होता है. ओके. Actually, it has been 15 minutes, and I think the last left part we must cover. You might have read, but थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो उसे हम लोग पढ़ लेंगे. वो connection fluctuation की वजह से नहीं हो पाया था. And then we will move to the exercises, which is again not at all tough because you have heard me well.
you have learned the chapter well, you have understood the matter well. तो ऐसा नहीं है ना, जैसे कभी कभी होता है हम लोग ऊपर के क्लास का सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. So far whatever you have read in ninth standard, are you getting the matter so tough that it is very hard to understand? Tell me the opinion in my subject English. Are you getting the English subject so tough? Because a few months before you were in 8th standard, and you might be troubled with the thoughts that class 9 would be so tough, or 10 the board one would be so tough. तो क्या आपको लग रहा है कि ये 9 वाला लेवल इतना टफ है या बहुत टफ है, समझा नहीं जा सकता? Because I believe you are going to enjoy more than 8th standard. You are going to enjoy this 9th and 10th standard. 8 वाले से ज़्यादा 9 10 में मज़ा आएगा. Okay, so it is not at all tough. बिल्कुल सही है. Everyone answered has answered in negative. So it is correct. बहुत tough नहीं है. It is interesting in fact. है ना? चलिए, अब ग्रामर का वैसा बोझ भी नहीं रहेगा आपके ऊपर, लेकिन बोझ नहीं रहेगा, मान्यता यही है दैट यू मस्ट नो द मैटर वेल. ओके, तो सीखते भी रहना है. फाइन. सो लेट मी रीड द 12th पॉइंट आउट. और हाँ, रीडिंग से मुझे याद आया, अगेन आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड with your response of the audio. रचित बेचारा परेशान है ये सुनने के लिए कि सर किसका सिलेक्शन हुआ, किसका अच्छा था, आप ग्रुप में डालिए. और मैं सेलेक्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गिने चुने ही वीडियो हैं, मैं अपने फिंगर्स पे गिन सकता हूँ, है ना. तो बिना कंपटीशन के फर्स्ट होने का नहीं है, इसलिए मैं अब तक नहीं भेजा रचित. So I want you, whatever your voice is, however you read, I want you or your audio clipping to reach me. Okay, in its original way. Whatever you are, whoever you are, there must not be any sort of hesitation to show that to someone who is going to correct you. है ना, ये ऐसे किसी को दिखाना होता जहां से आपको क्रिटिसिज्म मिलना, वहां पे आप हेजिटेट कर सकते थे. बट दैट मस्ट नॉट बी डन टू मी बिकॉज आई एम गोइंग टू करेक्ट यू. Okay, so I'm expecting the audio clippings, at least a paragraph, 1 to 2 minutes I have asked you. हाँ, तो 1 या 2 मिनट का ही मुझे ऑडियो चाहिए, बहुत कम मिला है. The same task I had given in ninth and 10th, but I am expecting more from you. Okay, you can do the same thing in WhatsApp. WhatsApp में जो लॉन्ग प्रेस करके रखते हो माइक वाला, उसे प्रेस करके बस एक पैराग्राफ पढ़ लेना है ना, कुछ करना भी नहीं है, वो छोड़ोगे मेरे तक पहुंच जाएगा. So got it. Okay, do that because I want you to correct the reading habit, the pronunciation, the way of reading. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं वैष्णवी, अब कर देना. Okay, coming to the point. Point number 12. Tired out, he slept before the little girl. So now we got to know that the father, when she screamed, when she had the bad dream, वो बुरा सपना बुचड़ वाला नाइफ रस्सी लेके जो था, वो फिर से देखी के दिया. And again she screamed, she shouted in her dream. Father came with a candle lit in his hand. जले हुए मोमबत्ती लेके पापा आए. He blowed that out, उसे बुझाया. Took Kezia to her room, to the big bed where the papers were there on the bed. He put that aside and he laid Kezia there. Now Kezia was very much close to her father. She tugged herself. She hugged her father. She tugged herself tightly, the shirt of her father. Okay, so now Kezia was feeling the heartbeat of her father and being tired, क्योंकि पापा दिन भर के काम की वजह से थके हुए थे. अब देखो, बच्चे के सोने से पहले तो पापा को नहीं सोना चाहिए था, ऐसा मोरालिटी बताता है, राइट, है ना, कि बच्ची सोई नहीं है, पापा सो गए. बट द चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड देयर कि पापा दिन भर काम करके थक के आए हुए, तो उनपे ये मोरालिटी लागू करना सही नहीं होगा. So the father was so tired
that he slept before Kezia. केजिया से पहले वही सो गए, है ना। पहले बच्चे को सुला के सोना चाहिए था, जैसा जनरली मदर्स किया करते हैं। बट मदर और फादर का वर्क नेचर अलग अलग है, तो एक ही चीज़ हम लोग दोनों से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज द फादर हैड वर्कड हार्ड थ्रू आउट द डे एंड we didn't know what work father was in, which profession father was involved in. It was not known to her, it was not known to me even, isn't it? We don't know because it is not mentioned in the chapter. So Kezia was comparing her father to the neighbor's father, the McDonald's, who she has seen through the fence, through the gap of the fence, and she felt bad. और केजिया को पहले बुरा लगा कि देखो उसके पापा ऐसे हैं, कितना मस्ती करते हैं अपने बच्चों के साथ, है ना। लेकिन एक केजिया के पापा है, अपने पापा है जो ऐसा नहीं करते हैं। इनफैक्ट उनमें बहुत ही थ्रू आउट द वीक पापा बिजी रहते हैं और संडे को वो रेस्ट करते हैं। ओके। और अभी भी केजिया को जो लेके आए तो केजिया से पहले पापा ही सो गए, इतने थके हुए थे। सो टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। A funny feeling came over her. Poor father, not so big after, and with no one to look after him. Now she understood the matter. Not so big after all. तो अपने पापा को वो giant monster sort of समझते थे, इतने बड़े, with a monster heart, with a heavy heart, with a stone heart, isn't it? But now she had the very funny feeling. नाउ शी हैड द फनी फीलिंग कि ये क्या मजाक है, मतलब इतने बड़े दिखते हैं बट है काफी सॉफ्ट हार्टेड। Okay, so with no one to look after him, now she felt that when Kezia feels bad, when Kezia grew angry, or when she remains sad, there are number of persons to console her. There are number of persons to make her understand or to pamper her. But who is there for the father? पापा के लिए कौन है? केजिया जब बुरा मान जाती है, गुस्सा जाती है, तो नंबर ऑफ पर्सन है उनके लिए, राइट। लेकिन अब वो छोटी सी बच्ची में इतना समझ आया, अब वो पापा को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पापा को पैम्पर करने वाले कौन है? कोई भी नहीं। देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हिम, देयर इज नो वन टू केयर हिम। लुक आफ्टर इज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है देखभाल करना, ख्याल रखना, केयर करना। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. तो ग्रैंड मदर को भी वो हग करके सोती थी, तो ग्रैंड मदर का सॉफ्ट बॉडी उन्होंने महसूस किया। लेकिन पापा का बॉडी काफी हार्ड है। तो जो फिजिकल लेबर करते हैं या फिर हम जो डेली बेसिस पे लेबर वाला काम करते हैं, उनके देखोगे उनके एब्स एब्स निकले हुए रहते हैं, पूरा मसल, है ना। जैसे कोई मैं जिम में जाके पैसा इतना खर्चा करके बनाता है, आप एक लेबर को देख लेना घर पे यदि काम करने आते हैं, उनका वो पूरा बॉडी ऑर्गन पार्ट्स एकदम प्रॉपर शेप में वैसा बना हुआ रहता है ना। एब्स एब्स भी निकला हुआ रहता है। सब वो हार्डनेस पापा को अपने डेली वर्क से मिला है, राइट। सो शी कुड फील द हार्डनेस, बट द हार्डनेस वाज नाइस। अब यहाँ पे बच्चे यदि ये सोच के दुखी हो जाए कि नहीं ग्रैंड मदर के साथ सोती थी तो वहां पे उनको सॉफ्ट बॉडी मिलता था हग करने को, है ना, टग करने को, लेकिन यहाँ पे तो अब फादर है और इनका बॉडी कितना टफ है। तो वर्क नेचर डिसाइड करता है लोगों का मेंटालिटी, वर्क नेचर डिसाइड करता है लोगों का फिजिक, राइट। सो एक ही पैमाने में सभी को जज करना थोड़ा गलत सा हो जाएगा, जैसे केजिया कर रही थी अब तक। With no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. यहाँ पे metaphor use हुआ है। Every day he was too tired to be a Mr. McDonald. तो मिस्टर मैकडोनल्ड का कौन सा काम है ये नहीं पता, हो सकता है उनका रिलैक्स वाला काम है या फिर अपना बिजनेस है, एंड ही यूज्ड टू enjoy his time because there are number of employees working under him. Yeah, very good morning, Ash. I'm fine, thank you. How about you?
So Kezia said here that he could not think her father to be Mr. McDonald's. इनके पापा या सभी कोई तो मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे नहीं हो सकते. उनका उनका वर्क नेचर अलग सा हो सकता है, या फिर वो रिलैक्स है, फ्री है, तो अपने बच्चों को फुल टाइम देते हैं. बट केजिया's फादर नेचर ऑफ वर्क नेचर इज नॉट सच. उनका ऐसा कुछ भी नहीं है. सो ही इज डिफरेंट. एंड the differences must be accepted, the differences must be known. Okay, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. तो रोज वो इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते. तो केजिया आप मिस्टर मैकडोनल्ड को देख के यदि अपने पापा से नाराज हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इशू समझ केजिया में डेवलप करना होगा, जरूरी है ना. केजिया को थोड़ा मैच्योर होना होगा. बट आफ्टर ऑल सी इज अ चाइल्ड, है भी तो वो छोटी सी बच्ची. जब मौका मिलेगा, जैसे मेच्योरिटी आएगा, समझ में आ जाएगा मैटर. ओके. बट नाउ सी वॉज अंडरस्टैंडिंग. अब उनके पापा के प्रति जो उनका परसेप्शन था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है. ओके. She had torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and shied. अब उनको अफसोस हो रहा है. She had torn up all his beautiful writing. तो उनका मेहनत से लिखा हुआ the speech for the port authority. She had torn that up. तो उसे फाड़ी थी. अब उसे अफसोस हो रहा है. Again, she had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and shied. तो अचानक से अब होता है ना, नींद में एक तरह का झटका सा लगता है ना, या फिर हम लोग कुछ सोच रहे होते हैं, अचानक से that reaction comes. So she shied. She took a deep breath. Okay, shy, S-I-G-H. It's not S-H-Y, but S-I-G-H, which means taking a deep breath. So she shied, and all of a sudden she stirred. What's the matter? Asked the father. Another dream? So though father went to sleep, but still father was awake. He was conscious about the child lying beside. He was very much conscious. So as he stirred and sighed, father woke up and he asked again, "What's the matter? Another dream? Did you had the same bad dream?" The little girl said, "Oh, simply oh, my head is on your heart." Yeah. So while she laid with her father, she was sleeping with her ears on the heart. So head is used here. So her head was on father's heart. My head is on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. What a big heart you have got, father dear. So she was considering so far that father has stone hearted, little hearted, small hearted, है ना. ये एडजेक्टिव्स वो पापा के लिए यूज किया करती थी so far. But now she got to know, now she understood that what a big heart father had. Correct. So father remains too tired to be Mr. McDonald. That is not an issue anymore, because now the comparison is not made. अब वो कंपैरिजन नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा. Correct. क्योंकि सभी का अपना अपना यूनिकनेस होता है, अच्छाइयों का कारण, बुराइयों का कारण. इफ वी कैन अंडरस्टैंड द मैटर, देन द इशू इज सेटल्ड. And if not, it will keep on haunting, troubling us. Okay, so now Kezia is no more in trouble. Now Kezia is happy enough. Okay, so see, each and every chapter, there the chapter ends, but each and every chapter in literature is enlightening us slowly, gradually, is teaching us something worth valuable, something worthy enough that we can practically find in our society, and we can ourselves practically involve or experience the thing. And this is what something very common that happens to everyone, I think, in one way or the other. At times the reason of our sadness, the reason of our ill feeling, at times कभी कभी ऐसा होता है ना, we see others and we want our family members, we see others and we want someone, our acquaintances, to be the same in order to gain the same reputation that the others are doing, right? But we must not judge everyone in the same parameter.
Okay, so now Kezia have understood and we can take it in other way. हम लोग दूसरे तरीके से ले सकते हैं that now Kezia is a bit grown. Now Kezia has established the closeness, the intimate relation with her father, and thus she can understand well the mindset, the nature of her father. And now there would be no issue. अब पापा से डरने का कोई बात नहीं है. अब पापा जो इतने उनको ऐसा जाइंट लाइक मॉन्स्ट्रस जो दिखते थे, अब उनको पता चल गया कि वैसे नहीं है. ही इज वेरी मच सॉफ्ट हार्टेड. Okay. Okay, so this is the practical learning that we got from this chapter. We must not judge or want anyone to behave as per we want, because everyone has their own uniqueness. Everyone has their own way of expression. Everyone behaves according to their nature of work, according to their learning, according to their surrounding. है ना. सभी कोई जैसा सीखे हैं, जैसे सराउंडिंग में रहे हैं, जैसा ज्ञान संस्कार मिला है, वो एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट करेंगे, वैसा ही बिहेव करेंगे. सो दैट मस्ट नॉट बी एन इश्यू, बिकॉज वी टू आर डूइंग द सेम थिंग. मैं भी तो वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ जैसा लर्निंग हुआ है, सराउंडिंग रहा है ना, जैसे मुझे अपने एंसेस्टर्स से मिला हुआ है. आई एम बिहेविंग डूइंग द सेम. सो अदर्स टू वुड डू द सेम. Yeah, undoubtedly, if you think that some correction, some modification is required anywhere at any place, we must be ready for that change. We must build ourselves flexible enough so that we can adopt or we can adapt ourselves in the change. है ना, हमें चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा या खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशन एंड अडॉप्टेशन. आई थिंक यू नो द डिफरेंस. अनुकूलन, दैट इज अडेप्टेशन. अडॉप्ट ले लेना, मान लेना. ओके, fine. So that was the chapter, and I think the matter would not trouble you anymore. And in this week you will have only two classes per day. रोज का आपका दो क्लास ही होगा. रूटीन जैसा आपस में हम लोगों का डिसीजन हुआ है. सो इन दैट टू क्लासेस आई विल एक्सपेक्ट मोर पार्टिसिपेंट्स, मोर इन्वॉल्वमेंट. क्योंकि अब यदि तीन क्लास से आप थक जाते थे, आपका आंख थक जाता था लगातार स्क्रीन को देखते हुए, लगातार सुनते हुए, तो अब वो क्लास तीन से कम करके दो कर दिया गया है. ओके, and that is a trial, simply a trial for this week, because teachers are asked to visit a school so that they can involve into your matter. If you have any queries, you can visit school. If you have any issue regarding books, regarding chapter, less admission, registration, you can visit school. School is open after 10. Okay, and get it done. Register yourself if you have not yet done. Okay, get yourself admitted for the session, so that for the next exam we will plan it something different, in a different way. And though it is taking time, but the authority must order to open the institution with proper guidelines, isn't it? And there you must not have any issue, any problem. So keep in touch with the school and the authority. आप स्कूल वालों के साथ, अथॉरिटी के साथ, टीचर्स के साथ टच में रहोगे. ठीक है, कोई परेशानी है तो 10 बजे के बाद टीचर्स रहेंगे पॉसिबली, है ना, प्रिंसिपल से तो रहेंगे ही. सो यू कैन विजिट स्कूल फॉर एनी इशू, फॉर एनी शॉर्ट ऑफ करेक्शंस, क्वेरीज, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक अफेयर्स. ओके, चलिए, there the chapter ends, and the questions I do not find it tough. Still, let me the questions for you. यदि कुछ समझ में नहीं आएगा तो बताऊंगा, or else the answers are very easy and simple. Why was Kezia afraid of her father? ये हमारे ordinary discussion में भी ये आ चुका है. Why was Kezia afraid of her father? है ना, तो आंसर देना चाहोगे या लिख लोगे? बिकॉज वी हैड डिस्कस, यदि पिछला वीडियोस भी देखोगे तो उसमें आंसर मिल जाएगा. फाइन, तो मेरा इंटरेस्ट है टफ क्वेश्चन. यदि कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, तो उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज क्वाइट सिंपल. हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली? ये भी आसान है. चलो, एक का आंसर आ गया. बिकॉज फादर वाज एग्रेसिव एंड टॉक्ड हार्शली.
Can be the reason they were not frank enough, they were not close enough. Can be another reason. आप दोनों को ऐड करके लिख सकते हो. Who were the people in Kezia's family? This two is easy enough. केजिया के फैमिली में कौन कौन थे? क्लियर है? फादर, मदर, ग्रैंडमदर. यू कैन इवन ऐड द कुक एलिस. आप एलिस को भी ऐड कर सकते हो चाहो तो. What was Kezia's father's routine before going to his office? So the thing which is mentioned in the text, we will write that only. Before going to his office. अब ये तो नहीं बोलना है ना कि सुबह उठ के वो ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, इतना कुछ नहीं बोलना है. What is mentioned in the text, we will write that only. Okay, so before going to office, he used to give a casual kiss to his daughter Kezia, and in reply, she used to say, "Goodbye, father." So that's the only thing you need to answer. After coming back from his office से आ जाने के बाद का उनका क्या शेड्यूल था? इजी है, ये भी टफ नहीं है. इट इज वेरी क्लियरली मेंशन. वो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते थे. ही यूज्ड टू आस्क फॉर द न्यूज़पेपर. ओके, ही वांट्स टी. उनको चाय चाहिए होता था. राइट. ही वांट्स द बूट्स टू बी केप्ट आउट ऑफ द रूम. ये उनको करना होता था. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट इज वेरी क्लियरली मेंशन इन द टेक्स्ट इटसेल्फ. Again, so after coming back, he demanded tea, newspapers. ये लिख रहे हैं. On Sundays, and what used to be his regular routine on Sunday. Throughout the day, he used to work. On Sunday, complete rest. तो सोफा पे अपने बेस्ट कुशन पे पैर रख के हैंकरचिप से अपना मुंह ढक के वो रेस्ट करते हैं, सोते हैं. तो ऐसा नहीं कि पूरा संडे सो के ही गुजारते होंगे. दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट. So we need to keep in mind this event. Okay, fine. In what way did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father? Grandmother कैसे encourage करते थे केजिया को to get to know his father better? क्योंकि अब तक उनमें वो क्लोज इंटीमेट रिलेशन, वो इमोशनल अटैचमेंट जैसे आया नहीं था, है ना. इसीलिए एक दूसरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे. सो इमोशनल अटैचमेंट वाज द रीजन देयर. सो हाउ डिड ग्रैंडमदर एनकरेज? ग्रैंडमदर ने कैसे एनकरेज किया केजिया को टू गेट टू नो हर फादर बेटर? तो कैसे एनकरेज करेंगे केजिया को या किसी को भी? टू मेक अ पिन क्वेश्चन. ये बर्थडे आने वाला है, प्रिपेयर अ सरप्राइज फॉर हिम. और क्या जो अक्सर हुआ करता था उनमें एक बात है. ये तो बर्थडे साल में एक ही दिन आने वाला है. सो और एक गिफ्ट देना, सरप्राइज करना, दैट में इस्टेब्लिश द रिलेशन गुड. और क्या उनके रिलेशन को और सही करने के लिए ग्रैंडमदर क्या एनकरेज करते हैं, सजेस्ट करते हैं बोलने को? इफ यू फाइंड एनीथिंग. On Sunday afternoon, grandmother sent Kezia to the drawing room to meet. Exactly. Closeness is necessary. Closeness जरूरी है. If the emotional attachment is to be made, is to be created, closeness or spending time together is necessary. तो एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हम लोग सोच सकते हैं, यदि आपके अपने भाई भाई भी हो, लेकिन आप सालों से अलग हैं, आप कहीं और रह रहे हो, वो कहीं और रह रहे हैं, तो धीरे धीरे वो अटैचमेंट नहीं रहता है. इसमें बुराई कुछ नहीं है. दिस इज द कॉमन ह्यूमन नेचर कि हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ ही क्लोजली अटैच्ड रहते हैं. देख लो, आप भी अपने यदि पेरेंट्स के साथ ज़्यादा समय नहीं गुजारते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय गुजारते हो, तो आप सोच देखोगे. अब देखिए, बात तो काफ़ी मतलब मेरी बातों का खंडन मैं खुद ही कर सकता हूँ. ओके, बट द टाइम इज टू होम. जिसके साथ हम लोग ज़्यादा समय गुजारते हैं या जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं पॉजिटिवली, तो इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ ही होने का संभावना रहता है. ज़्यादातर देखोगे आप अटैच्ड हो किससे? जिसके साथ घर पे समय गुजारते हो उनसे, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आते हैं उनसे. तो उनके साथ यदि कुछ गलत हो जाए तो आपको बुरा लगता है. तो देश में कितने लोगों के साथ रोज कितना गलत हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं. डू वी एवर फील बैड? क्या हमें बुरा लगता भी है जब टीवी में न्यूज़ देखते हैं? कितने देर तक बुरा लगता है? और इसमें गलत कुछ नहीं है कि हम लोग लाइफ टाइम अब किसी के चले जाने पे
रोते रहें, that too is something wrong. But the point is our nature is developed such कि हम लोग जिसके साथ रहते हैं उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट बना रहता है. सो ग्रैंड मदर एनकरेज केजिया, ग्रैंड मदर ने केजिया को एनकरेज किया. इसके लिए फॉर द क्लोजनेस, कि जाके थोड़ा पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ तो फिर क्लोजनेस आएगा. नहीं तो यदि टाइम नहीं बिताएंगे तो ये दूरी बढ़ती चली जाएगी. एंड इट विल बी वेरी टफ टू ब्रिज द गैप. It will be very tough to fill the trench later on. Okay, so this is what happens, the emotional issue. Fine, so these are the questions. Again, there are number of questions that you need to discuss in detail. Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? So you need to mention the entire event there. Kezia's effort was to please her father, and that resulted in displeasing him. कुछ उल्टा हो गया, गलत हो गया. How? So we know the matter. When the grandmother was out in the garden, Kezia went to her mother's room. She saw the fine piece of papers kept there. She torn that into very small pieces and filled her birthday gift and sewed the fourth side. But the chaos was heard. The chaos was seen at night that day. एक अच्छा सा phrase आया था ना, who and anger, right? ये था ना, who and possibly word meaning में दिया, हाँ, who and cry. Anger नहीं, who and cry. So that night the house was completely disturbed. Okay, and father was very much displeased, and on that very particular night she was also beaten by the father. है ना, उनको रूलर से, छड़ी से, मतलब स्केल से मार भी खाना पड़ा था. तो तुम्हें इसमें एक्सप्लेनेटरी आंसर चाहिए. ये पैराग्राफ थोड़ा लंबा होगा. Kezia decides that Kezia decides that there are different kinds of fathers. अलग अलग तरह के फादर होते हैं, और फादर से आप सिंबोलिज्म के रूप में फादर को ले सकते हो. अलग अलग तरह के लोग होते हैं. ऑल आर यूनिक हियर इन दिस वर्ल्ड. व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज द मैकडोनल्ड, एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजिया's फादर? सो वी नो द डिफरेंस. हमें डिफरेंस पता है. व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनल्ड, है ना, एंड हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम केजिया's फादर. So Kezia's father has no time for the children due to his work of nature, due to his profession. And Mr. McDonald had all the time for her children, for his children. We don't know his profession. Okay. He used to play with them, enjoy with them, recreate them, but Kezia's father could not do that. वो ऐसा नहीं कर सकते थे. तो ऐसा नहीं है शायद वो जानबूझ के नहीं करते थे. ओके तो फिर इधर एक्सटर्नल साउंड भी ज्यादा हो रहा है. लास्ट क्वेश्चन एक है, पढ़ के फिर हम लोग रुकते हैं. हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी? सो वी नीड टू मेंशन द लास्ट लेटर पार्ट, द लास्ट इवेंट ऑफ द चैप्टर. How did Kezia got to know said that she also need human sympathy? She also need, sorry, not she, but he also needs sympathy. He also need attention. He is also in damn need of care, affection, love. Okay, so how did she got to know? उनको कैसे पता चला? So explanatory answer होगा. And with this let us end the chapter. Chapter को हम लोग end करेंगे. And this is, I think, the third round got completed. कितना है ना ये? Yeah. We have book का तीसरा. From the other book we are going to complete the third chapter, whatever it is. जो भी chapter है अगला वही होने वाला है. As a task, अब आपके पास दो काम है. एक तो आप मुझे वो ऑडियो सेंड करोगे रीडिंग वाला, and the other one you need to write the answers in your notebook. और आंसर्स में परेशानी हो, लिखने में परेशानी हो, do remember me. Okay, I'm there to help you. Okay, fine then, let it be for the day. अभी के लिए इतना ही रहने देते. We will see again, we will meet again, and slowly gradually you need to work for the development of your foreign tongue. आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं. तो थोड़ा ज़्यादा अंग्रेजी सुनोगे, थोड़ा बोलने की कोशिश करोगे, थोड़ा लीगल मैटर ग्रामर का जान लोगे, एवरीथिंग, द जर्नी विल बी वेरी इजी.
ठीक है, तो अभी के लेक्चर में शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द पार्ट आई स्पोक इन इंग्लिश, ज़्यादातर मैंने इंग्लिश में ही बोला है ना। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि इंग्लिश वाला ड्यूरेशन मुझे बढ़ाना है और हिंदी वाला धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, फिर रुकते हैं अभी के लिए। लेट इट बी फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।